Dibakar Banerjee to do a film with you, and that film gets someone like Javed Akhtar to praise you. ब्रिक बैट्स मिलने की आदत हो गई है, प्रेज की आदत छूट गई थी, तो अच्छा लगा जब संदीप और पिंकी को इतनी तारीफ मिली. आई एम नॉट टाइगर श्रॉफ, आई नेवर पुट माई सेल्फ आउट एज टाइगर श्रॉफ. I never, but I came as a fit guy who could lift his t-shirt and show his abs in Chokra Jawan. And that's a minimum that I should be able to guarantee in any film that I do. Actually, surprising, I felt very bad because I somewhere felt the film deserved better. Me and Anil Chachu together. तो कहीं ना कहीं बुरा लगा मुझे. I felt really sad about it. Hi दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन कपूर and you're watching Bollywood Hangama. Keep on watching. ओके, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि आप जुहू से बियॉन्ड आप नहीं गए थे, एंड जस्ट गेट समवन लाइक दिबाकर बैनर्जी टू डू अ फिल्म विद यू, एंड दैट फिल्म गेट्स समवन लाइक जावेद अख्तर टू प्रेज यू. एंड जावेद अख्तर, द वे ही इज, he can be critical of anyone. Yes. He can even criticize Amir Khan. He doesn't care what the reputation of anyone is. If he feels something, then he'll do that. So if the praise is coming from that quarter, then it carries a lot of currency. Yes. Because he does not praise anyone just like that. तो आप, do you at times find it unbelievable? तो मैं कुत्ते की शूटिंग कर रहा था हाल ही में, उसमें नसीर भाई भी है, नसीर सर इज देयर. क्या बात. नसीर सर के साथ मैं फाइंडिंग कर चुका हूँ, तो एक थोड़ी सी एक वार्मथ ऑब्वियसली है, एंड ही इज वर्क विद डैड बिफोर. तो व्हेन I was meeting him again, I was as nervous as anybody should be meeting Nasir sir. Kumud sir, मैं और Nasir sir shoot कर रहे थे. Kumud Mishra. And he came and I went to shake his hand because वो nervousness में handshake, and he hugged me and he said वो तुम्हारी पिक्चर देखी दिवाकर वाली, बहुत अच्छा काम किया तुमने. अच्छा. And I was like, for me, जावेद साहब, नसीरुद्दीन शाह, कुमुद सर telling me कि मैं वेट कर रहा था तुम कब स्लिप हो गए एक्सेंट में, और तुम नहीं हुए. हम तो वहाँ के रहने वाले, हम तो समझते हैं, और बहुत उम्दा काम किया. सो व्हेन यू, ये महारती लोग हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू कंज्यूम योर मटेरियल, लेट अलोन अप्रिशिएट इट. इट मेक्स यू रियलाइज कि आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा. बिकॉज वी वर्क रियली हार्ड ऑन दैट फिल्म एंड इट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग. इट इज सरियल, इट इज अनबिलीवेबल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ब्रिक बैट्स मिलने की आदत हो गई है, प्रेज की आदत छूट गई थी, तो अच्छा लगा जब संदीप और पिंकी को इतनी तारीफ मिली. यार फरीदुन, मैं मानता हूँ दैट फिल्म आपने देखी है, आप क्लाइमैक्स देख चुके हो. आई थिंक बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका उतना कन्विक्शन होगा उस तरह का क्लाइमैक्स करने का डायरेक्टर के साथ. सो आई थिंक माई कन्विक्शन एंड माई बिलीव इन द डायरेक्टर, लविंग द मटीरियल, वॉन्टिंग टू मेक समथिंग यूनिक. दैट डायलेक्ट वी वर्क फॉर 3 months. ही टुक मी टू Delhi, made me stay with him, cleaned my entire dialect out by making it not a dialect but making it part of my personality, to make me play a character called Pinky, the most masculine looking guy playing a guy called Pinky, which is so important in the film. एंड में जो नचाया है मुझे, क्लीन शेवन करके, मेकअप लगा के, एंड नॉट मेक इट कैरिकेचरिश. एक मैसेज देना सोसाइटी के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, एक थॉट प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे इधर एक डिवाइड आता है कल्चरली, वेयर men and women are treated differently. I think the film had a very big message to give. That is why it resonated with a lot of people who have the sensibility like Javed Saab, Nasir Saab, Kumud sir. It's not just a film, it is a statement on society and the culture that we live in. So I think वो फिल्म सही बैठी, उसमें हम दोनों सही बैठे, परिणीति और मैं. I just feel very, very grateful that I got a shot in the arm at a time where, I can say this fairly, I was being written off by many people, and fairly so, because films didn't do well at the box office, and that is our currency. Just a shot in the arm कि मैं अपना काम तो जानता हूँ, कि काम को तो इज्जत मिली, एक अप्रिसिएशन हुई, एक चॉइस की थी, थोड़ी सी अलग थी, बट उसको एक कम से कम एक, I got the push in the right direction, and I'm very, very happy about that. Not only Javed Saab and Nasir Saab and Kumud sir, generally people, even today, like when we meet, whether it's the media, it's the common man, the fact that they've appreciated Sandeep or Pinky Farhad, I think helped Bhoot Police get more appreciation. Because the baggage got reduced slightly because of Sandeep or Pinky Farhad. So I'm just happy that there was a positive spin to my career thanks to a film that I worked very, very hard on. Right, but you know, there is also this factor that at some stage you once again lost weight, and you know, in terms of the entire grooming thing. So suddenly आपका भी एक आपके look में भी change हुआ, and the way your appearance was. So how important is that particular aspect for actors to just make sure that it's very important. I think because the way I made my debut and the way I looked, there is a certain understanding the audience has that he's meant to look this way, and you're supposed to look a certain way to play certain characters also, right? You cannot play a character and not look like the character. थोड़ा अजीब हो जाएगा. Like in Sandeep और पिंकी फरार, वो मुस्टैच और छोटे बाल and the way I'm dressed and all is part of the character. That is not weight dependent. That character is not dependent on weight.
But there are certain films you do where you have to look a certain way. You have to come across like the character in your physicality, because that adds to the performance and the power. It is the most important part, and I owe it to my audience. And I say this with utmost regard, that I never took it for granted, but I thought I am going to be able to do it when the time is right. When I started gaining a bit of weight, I thought, यार ये तो 1-2 महीने में हो जाएगा. But I just kept working, and I thought, यार मेरी पिक्चरें चलेगी तो automatically ये problem नहीं आएगी. So I think that was a bit naive on my part. I was young. आपको success मिलता है तो आप बह भी जाते हो, which everybody goes through that phase. Right. I didn't take care of my health. I didn't take care of myself. I went out of routine to work extra hard on the film. But I didn't work extra hard on myself like the way I should have. And when the lockdown happened, the first one, that's when I realized that I owe it to my career, I owe it to my profession, I owe it to wanting to connect with the audience, that I look the way they expect me to look. There is nothing wrong with that expectation. And I'm not talking about बड़ा पर्दा या छोटा पर्दा. I'm just saying कि मैंने एक डायनामिक क्रिएट किया था. मैंने एक अर्जुन कपूर आपको प्रेजेंट किया था. अब मैं आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपको नहीं भा रहा है, बिकॉज आपको वही अर्जुन कपूर चाहिए. तो वो दैट इज माई ड्यूटी एज एन एक्टर टू गो बैक टू दैट एंड बेटर इट. I mean, we have Anil Kapoor as a living reference. How can I take it for granted at all? And I didn't, but it came across. Acha, kya hoga? Because I put on weight, people thought I'm lazy. I'm not lazy. I'm very hardworking. People thought he's not interested. I'm very interested. Like you know, since day one, I'm very interested. But I cannot blame the audience. They don't know me, na. वो तो वही देखते हैं जो दिखाया जाता है. So they started obviously disconnecting with me or feeling, यार, we put our faith in the wrong person. Now we'll see अगर picture अच्छी होगी तो ticket खरीदेंगे. And I felt the biggest difference. I can tell you, I've said this in the past also. हाफ गर्लफ्रेंड लगी 10 करोड़ की ओपनिंग, मुबारका लगी 5 करोड़ की ओपनिंग. यानी कि उस दौरान जिस तरह मैं मुबारका में लगा या हाफ गर्लफ्रेंड के एंड में लगा था, कहीं ना कहीं ऑडियंस का एक विश्वास उठ गया था कि यार हम पहले दिन जाके इस आदमी की पिक्चर देखना चाहते हैं. एंड वो दैट इज माई ड्यूटी. इफ आई एम चार्जिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, इफ आई एम ऑन द पोस्टर, आई हैव टू मेक द फिल्म वॉचेबल, राइट? आई कैन नॉट मेक इट अनवॉचेबल. देन आई एम फेलिंग द फिल्म. आई एम फेलिंग माई कैरेक्टर, आई एम फेलिंग द ऑडियंस, आई एम फेलिंग माई डायरेक्टर, आई एम फेलिंग द potential of a story. So yes, I did screw up, I did mess it up to some degree, and I'm the first to admit it, and I worked hard again, because मेहनत से मुझे डर नहीं लगता, but टाइम लगता है. जो चीज़ मैं शायद 22 साल की उम्र में 1 साल में कर पाता, अब मुझे 2 साल लग गए. But today I feel proud that I can put up a photo on Instagram and say this is who I am and this is how I look. I've worked hard for 18 months, 15 months to change myself, and I can put a before and an after. I don't mind speaking the truth. I'm not Tiger Shroff. I never put myself out as Tiger Shroff. But I came as a fit guy who could lift his t-shirt and show his abs in Chokra Jawan. And that's a minimum that I should be able to guarantee in any film that I do. Okay. So villain के साथ मुझे मौका मिला. I hope when you guys see the trailer, you guys can see the difference, see the change, and see the effort, and see a look, and see Arjun that perhaps I would want the audience to remember me more rather than the Arjun of Mubaraka or say Panipat, for example. Right now, इस इंडस्ट्री में कहते हैं कि लक का बड़ा फैक्टर होता है. अभी मैं अबू धाबी में था तो अनीस भाई और राहुल देव, सो ऐसे वहाँ पर रेड कार्पेट के ऊपर आई वाज स्पीकिंग टू राहुल, सडनली अनीस भाई केम. फिर वो अब उसके बाद फिर वो राहुल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अनीस भाई कि दैट की डेविड जी हाँ, ही वाज इन मुबारका, एंड दैट द फैक्ट दैट डेविड सर की जितनी भी फिल्में अनीस भाई ने लिखी हैं वो एक अलग ही लेवल पे है कंपेयर टू. सो उसमें देन बोथ ऑफ देम वर डिस्कसिंग कि दैट मुबारका वाज अ वेरी गुड फिल्म एंड उतना चली नहीं. Correct. ये जो लक फैक्टर होता है, एंड इवन आई सॉ द फिल्म, आई लाइक्ड इट, एंड बहुत से और लोगों ने भी देखा, उनको भी पसंद आई, एंटरटेनिंग फिल्म थी. लेकिन कभी कभार फिल्म उतना नहीं करती है जितना कि आपको लगता है. वो एक सरप्राइजिंग होता है. व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द फिकलनेस ऑफ द फिल्म? बुरा लगा था एक्चुअली, सरप्राइजिंग सा था. आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज़ आई समवेयर फेल्ट द फिल्म डिजर्व्ड बेटर. The audiences that saw it loved it because the film opened at little less, but then it grew. It did 55 crores with the opposition of Harry Met Sejal and Toilet Ek Prem Katha and Bareilly Ki Barfi coming back to back. So what you say about luck, I think the trailer of the film didn't hit the spot. I think the trailer didn't promise an Anees Bazmi entertainer. Okay. The music was good, but then eventually हमारा campaign लंबा चला तो कहीं ना कहीं the trailer had not tracked enough, so the music couldn't support the campaign. You know, trailer अच्छा होता है और गाने आते हैं ना तो it lifts the campaign. If you see Bhool Bhulaiya's trailer was good and the song lifted the campaign. So the thrust of the marketing didn't happen the way it should have perhaps. And those are bigger decisions taken by a lot of people involved. And like I said, I feel I had lost a bit of connect with the audience because of the way I was looking in the film. But having said that, I think Anees Bhai ने बहुत अच्छी picture बनाई. It was unfortunate that it didn't get its due theatrically to the extent.
It did 55 crores. That's not a small number. I think today anybody will take 55 crores with the way the industry has been going for the last couple of months. 55 crores is a very decent number. Nobody lost money on the film, but yes, satellite पाई तो लोगों को और पसंद आई. अब डिजिटल पे लोग देखते हैं, but the film didn't get its due. और बहुत अच्छी पिक्चर है यार. मतलब मुझे तो बहुत अच्छी साफ सुथरी. My first comedy to do a double role without only mistaken identity. You know, to have talking to myself, me and Anil Chachu together. तो कहीं ना कहीं बुरा लगा मुझे. I felt really sad about it because we worked. I mean, I worked so hard on that film. यार, Faridul, मतलब we had YRF doing the VFX because we saw Dhoom and we said, you know, Arjun talking to Arjun, we will do at the highest caliber. Anish bhai, like a student, understood how to do VFX right, got into it, and what a director he is. And I think we worked very hard, and the film stands the test of time. बट थिएटर में उतने लोग पहले दिन नहीं घुसे. और वो आजकल तो वही हो गया ना, पहले दिन नहीं जाते तो बहुत मुश्किल होता है टू ग्रो फ्रॉम देयर फॉर बिगर फिल्म्स. सो आई फील बैड, बट luck, yeah, that's part of it. Sometimes you get lucky also. Sometimes, like Kiyanka was not expected to do that well. Yeah, that is one film that I think surprised everyone. Yeah. मैंने तो आपको भेजे भी हैं pictures of stores. Yeah. Even today I meet people who say, "अरे यार, what a film, what a concept," and that time it was very new. So तभी मुझे इंडस्ट्री ने बोला था ये पिक्चर मत करो. तभी मुझे पूरी दुनिया ने बोला था ये पिक्चर गलत है. तुम्हारी तेवर नहीं चली है, करीना की गोरी तेरे प्यार में नहीं चली है, बाल्की की शमिताब नहीं चली है, क्यों कर रहे हो? ये क्या टाइटल है? की एंड काम. व्हाट इज दिस फिल्म? और तुम हाउस हस्बैंड, तुम एक्शन हीरो यार, औरंगजेब, गुंडे, इशकजादे, तेवर, यू नो योर दैट इमेज. आई सेड नहीं यार, ये मेरी कन्विक्शन है यार. इट्स अ वेरी यूनिक थॉट. और ओपनिंग डे तक भी दे वर ऑल सेइंग नहीं 3-4 करोड़ 3-4 करोड़. 7.5 करोड़ किया था पहला दिन. 7 crores 30 lakhs was the first day, and that was just the audience. So that is also, there is a luck involved. No? The concept connected with the audience also. Of course, they liked the film, but you took a chance. No? You took a chance. So it balances out in a career also. I'm sure actors will tell you. Music was good as well. Yeah, high heels work very well. Music was good as well. Hi दोस्तों, मैं हूं अर्जुन कपूर and you're watching Bollywood Hangama. Keep on watching.